Event started in the name of God, and for this purpose I would like to call on stage the chaplain of UCH, Amjad Niyamat. हम शुक्रगुजार हैं इस बात के लिए कि इस मुल्क में खुदा मसीही कौम मौजूद है और उन्होंने गिरां कद्र खिदमत को सरअंजाम दिया है तालीम के मैदान में, सेहत के मैदान में, जिसकी कोई नज़ीर हमें नहीं मिलती। हम अपने तमाम उन खादमों को, तमाम उन मिशनरीज को, तमाम पाकिस्तानी बहन भाइयों को जिन्होंने क़याम पाकिस्तान से लेकर इस्तेहकाम पाकिस्तान तक इस मुल्क में हर मजहब मसल से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की खिदमत की है, हम उनके लिए शुक्र करते हैं। The importance of प्रोग्राम जो है वो आपने ये बैकड्रॉप पे भी देखा और अभी आगे चल के हम इस पे डिटेल से बात करेंगे, क्योंकि जो मारूफ ने मुझे बताया था कि अभी तो मुझे जो मौका दिया जाएगा वो सिर्फ वेलकम के हवाले से है। Starting from Pastor Morris Bashir, and I would like to say that he is one of the most active pastors that we have in the community. And then we have Ms. Sumaira Mirza from PTV. Then we have our chaplain from UCH. We have our gospel singer Faraz Nair. We have Mr. Mureed Bukhari from Payam, and Mr. Mureed Bukhari travelled all the way from Islamabad to be with us here today. And he's also the Vice President of EBIL Pakistan. So some of the guests are on the way. I just heard that MPA Aisha Iqbal is just entering, and then it goes on. It's quite long. So, but today, I'm sure that when you go out of this hall, you'll proudly claim that Christian community has remarkable contribution in the health department as well. And you'll claim that there is one institute having a prolific history and legacy, and that is UCH. UCH, United Christian Hospital, it's your own institute, it's my institute, and it's time for us to learn. The idea of this event came when I started working with the Pakistan Christian Outreach Foundation on a documentary regarding UCH. So while making that documentary, I met these men, these amazing men, I would say. I met Mr. Imran Titus, then Mr. Kenneth Ashad, Mr. Akil Haq, and Mr. Suhail Aslam, who is the director of PCOF. So when I met these men and I went through all these places, I got a deep insight into the history and into the legacy of UCH. And that's when this idea struck to pass this history and this legacy to you people, to the youth. So we have a guest again, Ms. Aisha Iqbal, and I highly welcome you to the event. Talked about the documentary. So we worked really hard for this documentary. We tried to sum everything up in just 15 minutes, though it was very difficult, but we have tried our best to do it. I would call it, this is just a small ride into the history of UCH. My name is Maruk Samandal, and I'm the media partner of Pakistan Christian Outreach Foundation. Has taken the responsibility of making improvements and upgrades in the School of Nursing. On 12th of September 2020, our local board members and the country coordinator visited the hospital and presented an initial check to start out a organization with us, Pakistan Christian Outreach Foundation. I would like to call Akil Haq to give a short brief regarding PCOF. I want to take few minutes to tell you about our organization. It is based in the US and as a 501c3 non-profit organization. I want to make it very clear that we are not an NGO, and as such do not carry out any projects on our own, but rather we are a Christian welfare organization.
and our main objective is to assist existing institutions already established by the missionaries for welfare of the underprivileged over the last 7 decades. मसीह के नाम में बहुत बहुत सलाम और मैं सारी टीम को UCH की मुबारकबाद देना चाहता हूँ रिस्टोरेशन के प्रोसेस के लिए भी, रीबिल्डिंग, रिन्यूअल एंड रिवाइवल। एंड द थर्ड थिंग कि आप न्यू जनरेशन में इस विजन को इम्पार्ट कर रहे हैं। तेरे भेदों को कैसे समझ पाऊं मैं, तेरे भेदों को कैसे समझ पाऊं मैं, मेरी हिकमत में ऐसी बात नहीं। ताली के साथ गाएंगे। जो समझ में ना आए झील पढ़ो, ईमान रखो तो समझ जाओगे, वो ही अव्वल है और आप ही। मैं चाह रही हूँ कि मैं स्टार्ट कर दूँ, तो मैंने इंशाल्लाह ताला फरवरी में ही 6 व्हील चेयर्स और 7 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट। PTI की मैम ने कुछ अनाउंसमेंट की, so this is the achievement. This is even small, but जैसे I was discussing with Maru के because I have a very good connections with UN, so I will try to connect these peoples with UN to get as much as Now we are trying our best to upgrade our School of Nursing to College of Nursing. Soon, with the grace of God, we will start BSN classes on our campus. UCH के लिए एक पैशन और एक थॉट जब हम गुजरते थे यहाँ से या जब हम देखते थे, तो ये मेरा मानना ये था कि when you are out of the ring, जितना मर्जी आप शोर मचा लें, ना आप हार सकते हैं ना आप जीत सकते हैं। और अभी यहाँ पे UCH में हम एज ए वॉलंटियर काम कर रहे हैं एज UCH लवर्स के लिए, आज के इस प्रोग्राम के लिए, और तूने इस सारे प्रोग्राम में हमारी मदद की, रहनुमाई की, और हमें बड़ी बरकत मिली, खुदा बड़ी इंफॉर्मेशन मिली, और खुदा बड़े एक्साइटेड हैं इस सारे प्रोग्राम को करने के बाद। खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं।